Assalamu alaikum students. We were doing the translation of the chapter number 6, Nasiruddin. We were reading his anecdotes. Nasiruddin went to see a rich man. Nasiruddin went to गया see मिलने a rich man एक अमीर आदमी से. Give me some money, he requested. He requested उसने दरख्वास्त की. Give मुझ दो, me मुझे, some कुछ, money पैसे. नसीरुद्दीन एक अमीर आदमी से मुलाकात करने गया और उससे कहता है कि तुम मुझे कुछ पैसे दे दो. उधार मतलब उससे मांग रहा है कि तुम मुझे कुछ पैसे दो. द रिच मैन आस्क्ड व्हाई. अमीर आदमी ने पूछा क्यों. नसीरुद्दीन सेड आई वांट टू बाय एन एलिफेंट. आई वांट टू मैं चाहता हूँ, बाय ख़रीदना, एन एलिफेंट एक हाथी. अब अमीर आदमी पूछता है कि क्यों तुम्हें पैसे चाहिए. तो नसीरुद्दीन आगे से कहता है क्योंकि मैं एक हाथी ख़रीदना चाहता हूँ. अब वो क्या कहता है आगे से, इफ़ यू हैव नो मनी, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, यू कांट अफोर्ड टू कीप एन एलिफेंट, तो तुम एक हाथी रखने का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते. मतलब जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हें हाथी रखने की क्या ज़रूरत है. रिप्लाइड जवाब दिया द रिच मैन, अमीर आदमी ने. अमीर आदमी उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं हैं तो तुम क्यों ख़रीद रहे हो. आई केम हेयर, मैं यहाँ आया था. सैड नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन ने कहा, टू गेट मनी, पैसे लेने के लिए, नॉट एडवाइस, नसीहत नहीं. वो कहता है कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए, मुझे कोई नसीहत नहीं चाहिए. नसीरुद्दीन क्लाइम्ड इनटू समवन किचन गार्डन. नसीरुद्दीन एक बार किसी के सब्जियों के बाग में घुस गया. किचन गार्डन सब्जियों का बाग, समवन किसी के. एंड स्टार्टेड फिलिंग अ सैक विद एवरीथिंग दैट ही कुड ले हिज हैंड्स ऑन. और हर चीज़ से जो एक थैला भरना शुरू कर दिया जो उसके हाथ में आ सकती थी. स्टार्टेड फिलिंग, स्टार्टेड शुरू कर दिया, फिलिंग भरना, सैक थैला या थैली, विद से एवरीथिंग हर चीज़, दैट ही कुड ले हिज हैंड्स ऑन जो उसके हाथ में आ सकती थी, यानी जो चीज़ उसके हाथ लगी उससे उसने वो थैला भर लिया. द गार्डनर सा हिम, गार्डनर माली, सा देखा, हिम उसे, किसको, नसीरुद्दीन को. एंड और केम रनिंग, दौड़ता हुआ आया. केम का मतलब है आया, रनिंग भागता हुआ या दौड़ता हुआ. व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. ही आस्क्ड, उसने पूछा. अब माली ने देखा कि ये बंदा ये काम कर रहा है तो वो भाग कर आया और पूछा क्या कर रहे हो. आई वॉज ब्लोन हेयर बाय अ विंड, रिप्लाइड नसीरुद्दीन. आई वॉज ब्लोन मतलब मुझे हवा उड़ा कर यहाँ लाए, बाय द विंड हवा, मुझे हवा यहाँ उड़ा कर लाई थी, नसीरुद्दीन ने जवाब दिया. अब ये उसको किस तरीके से जवाब दे रहा है हर बात का, देखें. एंड हु अपरूटेड द वेजिटेबल्स, और सब्जियाँ किसने उखेड़ी. अपरूटेड उखेड़ना, वेजिटेबल्स सब्जियाँ. अब दूसरा सवाल उसने पूछा कि ये सब्जियाँ किसने उखेड़ी. आज द गार्डनर, गार्डनर ने पूछा यानी माली ने पूछा. आई कॉट होल्ड ऑफ देम टू स्टॉप माई सेल्फ बींग स्वेप्ट अलॉन्ग. कहता है कि ख़ुद को हवा में उड़ जाने से रोकने के लिए मैंने उन्हें पकड़ा था. कॉट होल्ड ऑफ देम यानी मैंने उन्हें पकड़ लिया था. टू स्टॉप माई सेल्फ यानी अपने लिए कह रहा है, स्टॉप रोकने के, कि इतनी तेज़ हवा थी कि कहीं मैं उड़ ना जाऊं तो मैंने ख़ुद को रोकने के लिए उन सब्जियों को पकड़ लिया था. एंड हाउ कम्स दैट देयर आर वेजिटेबल्स इन दैट सैक. कहता है और ये क्या माजरा है. एंड हाउ मतलब ये कैसे हुआ. कम्स आई है, दैट देयर आर वेजिटेबल्स के इस ये जो इन दैट सैक ये जो थैला है इसमें सब्जियां किस तरह आ गई. बाकी सब चीज़ों के तो उसने जवाब दे दिए थे, तो अब कहता है कि आखिर ये सब्जियां इस थैले में खुद ब खुद कैसे आ गई. तो अब वो कहता है उसे, दैट इज़ जस्ट व्हाट आई वाज वॉन्डरिंग अबाउट व्हेन यू इंटरप्टेड मी, नसीरुद्दीन सैड. कहता है बिल्कुल यही बात है जिस पर मैं हैरान हो रहा था जब तुमने मुझे रोका. इंटरप्टेड का मतलब है मुदाखलत करना, मतलब तुमने जब मुदाखलत की मुझे आवाज़ दी कि ये क्या करे, तो मैं तो यही बात सोच रहा था कि आखिर ये इस थैले में कैसे आ गई सब्जियाँ. तो देखिए अब किस तरीके से वो बात को मज़ाक का रूप दे देता है. अच्छा नेक्स्ट देखें. अ नेबर
called on نصیر الدین. called on کا مطلب ہے کہ ملاقات کے لیے آنا. کہتے ہیں نیبر ہمسایہ. ایک بار ایک ہمسایہ نصیر الدین سے ملاقات کیا ہے، اس سے ملنے آیا. اینڈ سیڈ اور کہا I want to borrow your donkey. بورو کا مطلب ہوتا ہے ادھار لینا، مستعار لینا. کہتے ہیں میں تمہارا گدھا ادھار لینا چاہتا ہوں تم سے. I am sorry. میں معذرت خواہ ہوں. سیڈ نصیر الدین. نصیر الدین نے کہا بٹ لیکن میں have already lent it out. میں پہلے ہی کسی کو ادھار دے چکا ہوں. بورو کا مطلب ہوتا ہے کسی سے لینا، ادھار لینا، مانگنا. اور لینٹ کا مطلب ہے دے دینا، ادھار دینا. تو کہتے ہیں میں تو پہلے ہی کسی کو دے چکا ہوں. اب اس کا دل نہیں ہے دینے کو کہ وہ ادھار دے. As soon as he had spoken. As soon as مطلب جو ہی he had spoken وہ بول چکا تھا. مطلب اس نے یہ الفاظ کہہ دیے تھے the donkey brayed. تو گدھے نے آواز نکالی. اپنے رینکنے کی یا ڈھینچو ڈھینچو کی جو اس کی آواز ہوتی ہے وہ گدھے نے نکالی جب کہ وہ یہ بات بول چکا تھا. The sound came from نصیر الدین stubble. آواز came آئی تھی فرام نصیر الدین stubble نصیر الدین کے استبل سے. آواز کہاں سے آئی تھی گدھے کی؟ نصیر الدین کے استبل سے. بٹ نصیر الدین I can hear the donkey in there, the man said. تو اس آدمی نے کہا لیکن میں تو، اس نے استبل کی طرف اشارہ کیا کہ میں تو وہاں سے گدھے کی آواز سن سکتا ہوں. مطلب وہ اس کو جتا رہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں تو گدھے کی آواز آ رہی ہے. As he shut the door in the man's face, نصیر الدین said with dignity. As he shut کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا. The door دروازہ. In the man face آدمی کے منہ پر، مطلب آدمی کے سامنے اس نے اس کا دروازہ بند کیا. نصیر الدین said with dignity. نصیر الدین بہت شان و شوکت سے، بہت وقار سے یہ کہتا ہے A man who believes the words of a donkey in preference to my words does not deserve to be lent anything. A man ایک آدمی who believes جو یقین رکھتا ہے the words of a donkey گدھے کے الفاظ پر in preference to my words میرے ورڈز کے مقابلے میں. پریفرنس کا مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا. does not deserve وہ مستحق نہیں ہے. to be lent anything کہ اس کو ادھار دیا جائے. کہتا ہے ایک شخص جو میرے الفاظ کے مقابلے میں گدھے کی بات کو ترجیح دے رہا ہے تو اس بات کا مستحق ہی نہیں ہے کہ اسے کوئی چیز ادھار دی جائے. تو اسٹوڈنٹس امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ نصیر الدین کے لطائف تھے. اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں اور اس کا جو ٹرانسلیشن ہے، اس کی ٹرانسلیشن جو ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.